start the session at 3:05. Let's wait for 2 more minutes and then we'll start. Okay, let's start. Meanwhile, maybe other people join. So, good afternoon, everyone. Today we're going to do our fourth live session of GATE Coaching Biotechnology. And today I'm going to take genetics. So, I'll be taking question from the genetics portion, and we will continue clearing doubts through the question only. So, we'll take concept through questions only. That will help you the most in this 1 hour session. So, coming to the syllabus of GATE, so we have genetics and evolutionary biology in section 3 of the GATE syllabus, where we have Mendelian inheritance, where we have to study gene interaction, complementation, linkage, recombination, chromosome mapping, etc. And then apart from that, there is microbial genetics as well, where you need to study transformation, transcription, conjugation that happen in bacteria. And then there's a horizontal gene transfer and transposable elements as well. Apart from the basic genetic portion, you have chromosomal variation, genetic disorder, population genetics that you need to go through carefully, because you're going to get some, there will be some numericals from this particular portion. So you have to be very careful while studying population genetics and things from, wait a minute. Yeah. So then we have epigenetic selection and inheritance, adaptive and neutral evolution. This is more of evolutionary biology. I have not covered today evolutionary biology in today's section because it's a 1 hour class. We'll be mostly focusing on genetics and the numerical from this particular area, this particular subject only. So the first question is basically numerical only, where you have to calculate the frequency of allele in a population. So the question says, consider a population of 10,000 individuals which has 2,500 homozygotes, 3,000 heterozygote genotype. So we have to calculate the frequency of allele P. So what it's saying, that total number is 10,000, right?
I would suggest that you do this question simultaneously so that you can also practice this numerical. This is the question that is very frequent in all the biotech related or biology related entrances, and you might get many questions in other examination as well where you have to calculate frequency of allele. So it says that total number is 10,000. Then we have homozygote, that is capital P, homo. Then we have small, this is hetero. And we have again a homo population, which is a recessive homo population, which is small p, right? So here they have mentioned that we have homozygous population as 2500, heterozygous as 3000. So if I'm going to subtract this population from 10,000, I will get 4500, right? 5500 minus 10,000. Okay, so this is our recessive frequency of homozygous recessive. So if I'm going to, this is the number. So if I have to calculate the frequency, what frequency is? So if I have to calculate the frequency of, frequency means F, capital P, that is that how many individuals are there in the population which is homozygote capital P. So you have to calculate the uh, percentage of a particular trait in the total from the total population. So if I'm taking two capital P, that is a homozygote dominant, we have 2500 and total population is 10,000. So that's how we get 0.25 as a frequency of capital PP. I hope you are okay with this. Please comment on the chat box so that I get to know that you are with me on this particular question. Is it fine? यहाँ तक अभी तक समझ आया आप लोगों को? Yeah, okay. So Yeah. then we have frequency of heterozygous, that is uh, capital P and small p. We have 3000, right? Wait a minute. So this, okay, yeah, 3000 divided by 10,000, that make is 0.3. Okay, so now we left with homozygous recessive. For this, we have frequency as 0.45. If you're going to calculate the number, it will be 0.45. So the question says that we have to calculate the frequency of single allele P. So what is the formula? Formula is when you have to calculate a frequency of a small p, you have to calculate all the possible places where small p going to come. So it will come in homozygous. So homozygous में तो दोनों ही हमारे small p होंगे, ठीक है? Recessive homozygous में. So we have to take frequency of this plus half the frequency of heterozygous. Why half? Because we just going to have single small p in the heterozygous population. So जितना भी नंबर होगा, जितनी भी फ्रीक्वेंसी होगी, उसका हाफ होगा जिसमें हम ये कहेंगे कि स्मॉल p एलील आएगा. यू गॉट माई पॉइंट हियर? ये वाली पॉइंट समझ आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका. Yeah, okay. So this is just going to be the answer of your question. So frequency for small homozygous recessive is 0.45 and the frequency of heterozygous population is 0.3. So plus half the frequency of this, right? So it's going to be 0.45 plus 0.15, that is 0.6. So the answer is 0.6. I hope you got this question. Any confusion? Okay, for your reference, I'll say that you have
another slide. So answer is 0.6. So if you could see here, whenever you have to calculate the frequency of any allele, if it's capital A, you have to calculate all the frequency where capital A going to come. So in case of homozygous, you will have frequency of homozygous dominant, but in case of heterozygous, you will going to take only half. Why? Because half of the because this allele is going to contribute half in these particular I mean these number of people, the this allele is going to contribute only half. So that's why we're going to take half the frequency of this, because remaining will be contributed by the recessive allele. So that this is the whole formula. You have to just remember all these things and you can calculate with accordingly. I hope I don't have to get into detail of this thing again, right? Also, if you're going to have a frequency, for example, frequency of A, capital A is P, and frequency of small a is Q. So this formula is also applicable. If you have any of the frequency of allele given in your question, you can just calculate the frequency of second allele by this formula. So if you have A ka with you can calculate Q. If you have P given, you can, if you have Q given, you can calculate P. So this is just a formula for which you can apply depending upon whatever is given in your question. I hope this question is clear. This is a very important question. You will get such question in other exams as well. Shall I move to next question? Okay. So next question is, you have to match the chromosomal inheritance with their corresponding genetic disease or trait. So you have heard about in genetics that you have different type of inheritance, and depending upon such kind of inheritance, they're going to be some genetic diseases corresponding to these chromosomal inheritances. So, for example, if someone is carrying a disease containing trait in their autosomal genes, that their progeny, how the progeny going to behave, that depend upon the gene that they're going to carry, whether the trait is diseased or not, and whether it's on the autosomal chromosome or on the sex chromosome. So you have heard about these things. So just for your references, I'm not taking question first. I just want to make you understand what autosomal dominant and autosomal recessive means. So as the name suggests, or autosomal dominant, it's going to be a dominant trait in the parent, at least in one of the parent. So one parent is, if one parent is affected and one is unaffected, here male is unaffected and female is affected, so the progeny going to be that they will have 50% affected or 50% unaffected people. So if you could see, in case of autosomal dominant, you will never find that the traits skip the generation. So for example, if someone's parent carries some autosomal dominant trait, it will be passed to the first generation as well as to the second generation in case of autosomal dominant. But in case of recessive, अगर मैं यहाँ पे अगर इसके crosses, if you want, I can make the crosses and make you understand. Do you understand this concept, or do you want me to take it in detail? Tell me quickly. Ma'am, it's easily understandable. Yeah. Okay. Ma'am, okay. Yeah. Yeah. Tell me, if you want, I can take it again. Shreyansh, if you want me No, to. it's quite easy, ma'am. Okay, I fine. Then understand. we have autosomal recessive, where you have a recessive trait. Because it's a recessive trait, it going to be, it you maximum time it going to be in a heterozygous parent population. So you have carrier parent, and then you're going to have carrier child, and only 0.25% of 0.25, or you can say 25% of the progeny will be affected. Rest all going to be carriers only, because it's a recessive trait, और recessive trait कभी भी वो तभी express होगा जब वो दोनों form में recessive होगा, right? Coming to the next, that is X-linked recessive. X-linked recessive में क्या हो रहा है कि ये sex related है, ये सेक्स क्रोमोसोम रिलेटेड डिजीज है, बट ये रिसेसिव फॉर्म में है. तो यहाँ पे हमारे दो केसेस हैं. फर्स्ट केस में क्या है, यू हैव अनअफेक्टेड फादर एंड कैरियर मदर.
because it's a recessive. Always remember, when a disease is recessive, it's going to be a carrier only, right? So, uh, so in this case, because it's going to be X-linked, you have one X normal and another one is not, it's disease. So you're going to have half of your, because it's a X linked, the female will get another X from their father, like her father going to contribute one X, and that is not diseased. So they will be carrier daughter and unaffected daughter. Carrier in case where they're going to get one X affected from the mother, and unaffected in the case where both the X chromosome are unaffected. Likewise, when you come to affected father and unaffected mother, here you're going to have diseased father only. Why? Because it's X linked and Y chromosome is not contributing, so it's going to be affected, it's not going to be carrier in case of male. And then you're going to have both the daughter as a carrier, because daughter will always get X chromosome, one of the X chromosome from father, and if that is affected, they will be affected too. So this is X-linked recessive. I hope it's a very simple concept. You don't have to get into detail. I mean, you'll get this concept very easily. You don't have to think much. The only thing that you have to remember is when you're going to do a pedigree analysis. In that case, you have to remember that whenever there going to be a dominant trait, be it autosomal or X-linked, it's not going to skip generation. And when there is a recessive trait, it might skip it. There will be chances when it's going to skip one generation and appear in next. So recessive और dominant में यही majorly तुम्हें याद रखना होगा. अगर बात करें तो इसमें ये बोल रहा है कि वो रिसेसिव ट्रेट नहीं होगा. क्यों? क्योंकि वहां पर दोनों अफेक्टेड पेरेंट्स होते हैं. ऑटोसोमल डोमिनेंट में, सॉरी. सो यू व्हेन देयर आर टू अफेक्टेड पेरेंट्स, उनके ऑफस्प्रिंग कभी भी अनअफेक्टेड नहीं होंगे. मतलब को उनके ऑफस्प्रिंग मोस्टली अफेक्टेड ही होंगे अगर अगर उस पेडिग्री में पेरेंट्स अफेक्टेड है. और इन केस ऑफ रेसेसिव, अगर पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं है और तो भी ट्रेट आ रहा है, दैट मीन्स कि ये रेसेसिव ट्रेट था, इसने एक जनरेशन को स्किप किया और ये फिर अपीयर हुआ है. और मोस्टली पेरेंट्स यहाँ पे हेट्रोजाइगस ही होते हैं. ऐसे ही एक्स लिंक डोमिनेंट में अगर आप देखोगे तो पेरेंट्स जो है, कोई भी एक पेरेंट जरूर अफेक्टेड होगा. और मोस्टली मदर्स के केस के अंदर, इफ मदर इज अफेक्टेड, then son will be affected, half of the son will be affected. And in case of if father is affected, all their daughter going to be affected. And likewise recessive के केस में क्या होगा कि affected sons जो हैं वो generally affected mother से आएंगे. सो अगर मदर अफेक्टेड है तो सारे सन जो हैं वो अफेक्टेड होंगे, क्योंकि वाई क्रोमोसोम उनको फादर से मिलेगा और एक्स क्रोमोसोम मदर से मिलेगा. So likewise, you just get into the details of this. Now coming back to the question, we were talking about the disorder that are associated with autosomal dominant, autosomal recessive, X-linked dominant, X-linked recessive. So few disease that you have to remember, I have highlighted them. That for example, in autosomal dominant, you have to remember Huntington disease, Marble bone disease, Marfan syndrome. These are the commonly asked ones. Fine. And coming to the autosomal recessive, this is the whole list, but what you have to remember is cystic fibrosis, ketonuria, sickle cell anemia, Tay-Sachs disease. These are the ones that you have to remember, but if you want, you can remember all, but these are the ones mostly being asked. But also try to remember other ones, like for example, in one of the exam in DBT or maybe in CSIR, galactosemia has been asked. So these are some that you have to remember. Then sickle cell anemia, I have just given this slide for your reference, because sickle cell anemia is autosomal recessive, and how the trait how the generation get affected by sickle cell anemia as a autosomal recessive inheritance. So this is how it is. So you have chromosome 11 पे you have 1 point mutation where I think valine is replaced by one of the amino acid. So it is basically on chromosome 11, and
it follows the same trait like I mentioned, autosomal recessive. So you have to just try, just given this slide is basically for your reference so that you can remember this thing. Sickle cell anemia is one of the very much asked disease in the papers. So coming back to the question, we have talked about autosomal recessive, and as I have mentioned, can any of you tell me which one is autosomal recessive in these four? Cystic fibrosis. Yeah, so P3 is cystic fibrosis. Then we have autosomal dominant. I just told you that Huntington disease is uh, right. Then we have X-linked and Y-linked. You can guess it from here, but even if you cannot, I'll take you through X-linked inheritance and Y-linked inheritance. But just for your reference to solve this question, here X-linked is hemophilia A. A and B both are X-linked, and Y-linked may you have hairy ears. So if I go by the matching, I think C will be the yeah, it's C. So C will be the answer. But coming back to, wait a minute. So X-linked, for X-linked, you just need to remember a few like hemophilia A, hemophilia B, and others are like not mostly asked, maybe red-green color blindness. Just try to remember all these, and I've given all other information that it affect which particular protein or something that you need to remember related to these diseases. For example, in hemophilia A, there is a deficiency of factor 8. This is basically associated with, you know, what you say, blood clotting and other things. So these are the factor that is very essential when you talk about blood clotting. So that is that represent this disease. Then hemophilia B, maybe you have another factor that is also one of the factor that is associated with blood clotting is deficiency of factor 9. These are the ones that are essential during the clotting process. So you just need to remember few things about these disease. जितना ज़्यादा इस disease का थोड़ा बहुत देख लोगे, these are the disease you will get question from this list only. So just try to, if you have time, just try to remember कि कौन सा maybe कोई protein, a particular protein is affected by this in this disease, or there is something very peculiar, or maybe जिसे कहते हैं ना trademark of these disease, वो आपको एक बार देख लेना है. मैंने सारी चीजें नहीं डाली हैं इसमें, but still you can go back and check. X-linked dominance generally इसमें विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट की ही बात होती है, बट ऑल अदर डिजीज आर आल्सो देयर. सो जस्ट फॉर योर रेफरेंस आई हैव गिवन दिस. वाई-लिंक्ड इनहेरिटेंस, यू हैव 3 मेन डिजीज जो कि बहुत बार पूछी गई हैं क्वेश्चंस, बट जनरली लोगों को नहीं पता होता. तो you just have to remember these 3, and I'm pretty sure if something come from Y-linked disease, from Y-linked inheritance, come इन तीनों में से ही आएगी, which is hypertrichosis, which is called hairy ears. So hairy ears is a trait जो कि Y-linked inheritance के through मिलता है किसी को भी. And then you have web toe condition and porcupine man. These are the 3 conditions that is associated by chromosome, and this will pass only to the son only. These traits are not passed to the daughter of the family. Why? Because this is associated with Y chromosome only. So these are the things that you need to remember. Coming to the next question, here we have another question where you have to calculate the proportion of progeny with a particular genotype. So they have given 2 phenotype population which are just crossed, and you just have to calculate a proportion, or you can say a percentage of a particular genotype in the population. So how are you going to calculate it? First you have to check कि हमारे parental में क्या दिया है उन्होंने. They have given this. So now they have asked us कि हमें इस particular genotype की frequency बतानी है. तो अगर मैं सिर्फ इसको break करती हूँ, and I'll take first one, that is DD into DD.
right? So if you're going to how many type of offspring you're going to get, you will get dd, dd and dd, right? तो अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी निकालूं तो d और d का हो जाएगा 0.5 एंड d का हो जाएगा 0.5, right? Then coming to the next one, which is e into ee, where you have to this is basically heterozygous, so you will have ee, e e e e and small e, right? So in this case, capital E going to be 0.25, capital E going to be 0.5, small e going to be 0.25, right? I hope you get this thing कि चार में से हमारा सिर्फ एक ही है जो स्मॉल ई है, एंड चार में से दो हैं जो कि कैपिटल ई और कैपिटल ए, दैट्स व्हाई 0.5, एंड ओनली वन इज डोमिनेंट ई इन बोथ द केसेस, सो होमोजाइगस ई, right? So I hope this is clear. And then you have ff into ff, like you will have same kind of this thing here as well, ff ff f and small f. So capital F going to be 0.25, capital F small f going to be 0.5, small going to be 0.25, right? And then we have g into g, right? No, 1. So it's going to be gg. So it will be 0.5 and 0.5. Now we have to calculate this particular, we have to take frequency proportion of this trait, right? So for dt, you have 0.5 into small e, you have 0.25 into small f, 0.25, and small g, 0.5. So here we have 0.25 into 0.25 into 0.25. So, sorry. So if you're going to calculate it, it's going to come something around 0.6. और इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें, because we have to write in percentage, it's going to be 1.56% approximately. Fine, I hope you got this answer. So कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें यू हैव टू टेल कि इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ जीनोटाइप की परसेंटेज कितनी होगी प्रोजेनी में, यू हैव टू कैलकुलेट, यू कैन ब्रेक द parental genotype and calculate the frequency of each trait, and then you can multiply it together and you'll get the answer. I hope this question is clear. Shall I move to next Hello, one? ma'am. Yeah. Hello, ma'am. In all such type of questions, we have to take it as a monohybrid cross, right? In such type of question, we don't need to calculate or cross the whole gametes. We need to proceed it like a monohybrid cross, right? Yeah, I mean, if you remember, for example, if you remember, not exact, I mean, if you remember this thing that if I have a heterozygous population crossed with homozygous recessive, what will be the proportion of homozygous recessive in that? अगर आपको ऐसे समझ आता है तो वैसे भी कर सकते हो, ये बहुत ही सिंपल है, इसमें आपको मोनो हाइब्रिड और हाँ मतलब यू आर टेकिंग इट एज अ मोनो हाइब्रिड, राइट? यू आर टेकिंग ईच ट्रेट एज अ मोनो हाइब्रिड ट्रेट, राइट? यू हैव टू डू इट लाइक दिस, बट अगर आपको फ्रीक्वेंसीज इमीडिएटली भी याद रहती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू रिमेंबर कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में इफ आई हैव अ हेट्रोजाइगस पेरेंट क्रॉस्ड विथ होमोजाइगस रिसेसिव, व्हाट आर द प्रोपोर्शन? अगर आपको ऐसे भी याद है तो आपको सब कुछ ऐसे करके कैलकुलेट नहीं करना, यू कैन जस्ट डू इट इन फ्यू सेकेंड्स.
So yes, you have to divide the genotype into mono hybrid crosses. That will make this thing very easy. Otherwise you will never go, going to make some sort of mistake, and you don't have time. You have to calculate these questions in few seconds or maximum in a minute, because you have time boundations. I hope you got it right. Oh, okay, ma'am. Yeah. So the So monohybrid. this is the easiest way to do this thing. You can do it in taking all the gene, all the trait, for example, because these are different traits, right? If you're going to multiply this together, you'll have lot many parallel options, तो बहुत डिफिकल्ट होगा. तो यहाँ क्या कर रहे हो आप, सिंगल ट्रेट को उठा के उसके जाइगोटिक पॉपुलेशन को देख रहे हो कि हमें क्या उसके जाइगोट्स क्या मिलेंगे, या हमें क्या क्रॉसेस हमारे पास क्या F1 जनरेशन में ऑफस्प्रिंग्स आएंगे मोनोहाइब्रिड केस में. मोनो क्योंकि सिंगल सिंगल ट्रेट है, राइट? सो लाइक दैट. I hope this is done. Shall I move to the next question? Yes, ma'am. Yeah, okay. So the next question say a DNA strand of length 25 nanometer wraps diametrically around the circumference of a spherical histone octamer once. Remember, once. The radius, we have to calculate radius of the histone octamer. So what it says, this question is that हमारे पास एक octamer है जो कि spherical form में. octamer मतलब यहाँ इसके अंदर हिस्टोन्स होंगे 8, राइट? बट वो ओवरऑल क्या बन रहा है, एक स्क्वायर बन रहा है. और उस पे हमने डीएनए क्रॉस कर दिया है, हमारा डीएनए रैप कर दिया है एक बार, वंस. फाइन. सो या सो इसके अकॉर्डिंग अब हमारी उन्होंने डीएनए की लेंथ क्या बताई है, 25 नैनोमीटर. और तो अब देखा जाए, अगर हमारा डीएनए रैप हुआ है इस स्फीयर पे, दैट मीन्स जो इस स्फीयर का सरकमफ्रेंस है उतना ही हमारा डीएनए का लेंथ होगा, राइट? क्योंकि स्फीयर पे हमने उसको वंस लपेट दिया है, तो दैट मीन्स कि उतना ही उसका सरकमफ्रेंस होगा. और सरकमफ्रेंस ऑफ स्फीयर क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ स्फीयर, एक सेकेंड आप मुझे दोगे यार प्लीज, थोड़ा धीरे बोल दो प्लीज. सर्कमफ्रेंस ऑफ स्फीयर जो है वो होगा, एम आई ऑडिबल? ओके, Yes, आई ma'am. होप आई एम. या सो सर्कमफ्रेंस ऑफ स्फीयर होता है 2 पाई आर, राइट? So that means 2 pi r is equals to 25 nanometer here. So if I have to calculate the radius, 25 divided by 2 pi is the radius. That means 25 divided by 2 into 3.14. That will give approximately this going to be 12.5 divided by 3.4 going to be 3.9 something. 3.9 something. Calculate this thing and you'll get something around 3.9, I think 3.98 or 3.96, something like that. So this will be your answer. I hope you got the question here. कभी कभी क्वेश्चन में ये भी हो सकता है कि सिलेंड्रिकल है और उसमें कुछ कंडीशंस दिए हो सकते हैं कि उसकी जो डीएनए की हाइट है, जो डीएनए रैप्ड है उसकी हाइट सिलेंडर की उस हाइट जितना वो डीएनए है, समथिंग लाइक दैट. एंड उस वे से आप इनको इन क्वेश्चंस को कैलकुलेट कर सकते हो. सो दीज आर दिस इज द वे टू डू दिस क्वेश्चन. एंड ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको गेट में. आई होप दिस इज फाइन एंड वी कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये समझ आ गया ना? हाँ देखो, इसका आंसर इज Yes, 3.9. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमारी जितनी भी एनीप्लॉइडी होती है क्रोमोसोम में, उसका आपको बताना है, जितनी भी प्लॉइडी है उसका आपको एग्जैक्ट
कि what is the chromosomal number in these ploidy, you have to tell that. So let's do this question. I hope you have heard about the ploidies and all the genetic changes. So before doing it, I can take you through aneuploid, what exactly it is. Aneuploidy is basically abnormality in the number of chromosome, and this can be detected, this can be seen in any of the karyotypes. What has been done that जितनी भी aneuploidy है इनके karyotype check किया जाता है, and we see clearly उसमें देखा जा सकता है कि क्रोमोसोम के नंबर्स में डिफरेंस है. So if you could see here, this is the karyotype of a female with a Patau syndrome. Here you have a trisomy of chromosome, I think 13 की ट्राइसोमी होती है. तो इफ यू कुड सी हियर 13 के तीन क्रोमोसोम दिख रहे हैं 13 पे हमें, right? So these are the some chromosomal abnormalities that are there and that lead to disease. So that is aneuploidy. So ploidy का मतलब होता है anu is not basically it's not if I'm not wrong it's abnormal, and ploidy is because generally that gives you the number of chromosomes. So जैसे हम बोलते हैं haploid, हम बोलते हैं diploid. So that gives you the set of chromosome present in that particular this thing. So whenever there is an abnormality in the normal set of chromosome, that is aneuploid. So you have different type of, like you have nullisomy where you have two chromosome that are not there. So effectively वो diploid ही रहता है. जैसे मान लो कोई डिप्लॉइड है, उसमें से 2 क्रोमोसोम नंबर हट गए, तो इफेक्टिवली फॉर एग्जांपल 23 सेट ऑफ पेयर्स है, तो अब नाउ 22 रह गए क्योंकि 2 तो हट चुके हैं. तो ओवरऑल डिप्लॉयड रहता है, बट देयर आर सम एबनॉर्मेलिटीज बिकॉज ऐसा हो सकता है कि 13 में से हटा हो, 14 में से हटा हो, लाइक दैट. देन यू हैव मोनोसोमी. मोनोसोमी में क्या होता है, जनरली एक क्रोमोसोम का एक सेट मिसिंग होता है, मतलब एक सेट ऑफ क्रोमोसोम में से एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम मिसिंग होता है. तो यू हैव 2n-1, राइट? सो दैट इज देयर. देन यू हैव ट्राइसोमी वेयर यू हैव +1 के केस में क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम में जिसमें एक सेट में जिसमें 2 होने चाहिए वहां पर 3 है, तो that is trisomy. You have 2n+1 in that case. And then you have disomy where you have n+1, and that happen in haploid organism only. So क्या होता है कि for example किसी के 12 क्रोमोसोम है तो +1 होके 13 हो जाता है, like that. Right? So there are disease that you have to remember. ये डिजीज तो आपको पता ही होनी चाहिए कि ये एनीप्लॉइडी से ये पर्टिकुलर डिजीज होती है. जैसे एक्सो से टर्नर सिंड्रोम होता है. एक्सो ये सिर्फ फीमेल्स में होता है. इसमें क्या होता है कि फीमेल्स डोंट हैव अनदर एक्स क्रोमोसोम, और मे बी देयर वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम इज पार्शली डेवलप्ड या पार्शली प्रेजेंट. पार्शली व्हाई आई एम सेइंग, क्योंकि वो वर्क फंक्शनल नहीं होता, इट्स नॉट फंक्शनल. तो इस केस में फीमेल्स या तो शॉर्ट हाइटेड होती हैं, उनकी ओवरीज ढंग से डेवलप नहीं होती. तो दीज आर द सिम्टम, और ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. ठीक है? सो एबनॉर्मेलिटीज होती हैं इसमें. देन यू हैव क्लाइनफेटर सिंड्रोम. क्लाइनफेटर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है दैट जो मेल है उसके पास एक एक्स्ट्रा एक्स होता है, फाइन, एंड this also have a lot of effect on the overall phenotype of the male. Then you have triplo X syndrome where you have 3x, so इनको super females भी बोला जाता है. So these are the abnormalities that you're going to see. And here you have extra Y chromosome. So here also ये males में होता है, और here also you have some physical abnormalities there. Then you have autosomal aneuploidies where you have trisomy of 13 which called Patau syndrome. यहाँ पे mental retardness और बहुत सारी इसके symptoms हैं जो इन्फेंट्स में मिलता है, जो भी बच्चे इस पर्टिकुलर डिजीज के साथ बॉर्न होते हैं. एंड these are such disease that can not also have a deleterious effect on the zygote but also lead to the death of the baby after some
ईयर्स। सो ऐसा भी होता है, पर जैसे पटाओ के केस में ऐसा होता है। सो एडवर्ड सिंड्रोम में यू हैव ट्राइसोमी 18 एंड डाउन सिंड्रोम में यू हैव ट्राइसोमी ऑफ 21 21st chromosome. So these are the things that you need to remember. Coming back to the question where you have to match. So disome के केस में क्या है? This happen in haploids only. So you have just +1, that is here, right? नलीजोम के केस में, बिकॉज नलीजोम में मैंने बताया था 2n-2, बट अगर वो हैप्लॉइड होगा तो n-1 भी हो सकता है, आई थिंक सो। या लेट मी जस्ट चेक, मैं शायद गलत बोल रही हूँ इस केस में। नलीजोम का आई नीड टू चेक, आई थिंक 2n-2 ही होना चाहिए, बट लेट्स सी। इन केस ऑफ ट्राइजोम यू हैव 2n+1, and in case of monosome you have 2n-1 absent of one chromosome. So by this if you go, नलीजोम का n-1 ही होगा। ये एक बार मेरे को भी चेक करना पड़ेगा, बट आई थिंक ये होता है बिकॉज दैट आई डोंट नो। नलीजोम में जनरली कहते हैं डिप्लॉयड में यू विल always going to say that particular organism as diploid only because 2 क्रोमोसोम माइनस हुए हैं, बट एट द सेम टाइम क्योंकि माइनस हुए हैं तो डेफिनेटली इट इज़ एन एबनॉर्मलिटी। सो एक बार चेक कर लेना, 9n+1 भी होता है इसका, बट एनी हाउ द आंसर इज n-1 ओनली बाय द ऑप्शन ओनली। सो इसका आंसर ए है, वेयर यू हैव P4 Q2 R3 and S1. So this is the answer. I hope you got the question here. Coming to the next question, where you have a pedigree analysis. So जैसा भी मैंने आपको बताया था, autosomal dominant, X-linked, recessive dominant and autosomal recessive कि कैसे traits होते हैं, and by that you will definitely going to get, अगर उस part से question आ रहा है तो वो pedigree analysis ही होगा। So here if you could see, अगर हम अभी, मैं आपको वैसे डिटेल्स भी बताऊंगी कैसे चेक किया जाता है, कितनी कैसे यू कैन चेक एंड डू दिस क्वेश्चन राइट। सो फर्स्ट आई टेक यू थ्रू दैट एंड देन विल सॉल्व द क्वेश्चन। सो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हाउ वी गोइंग टू चेक कि ये पेडिग्री डोमिनेंट है, इसमें जो ट्रेट हम देख रहे हैं वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है। तो फॉर दैट यू हैव टू सी दैट फॉर इट ऑल शेडेड ट्रेट्स में क्या होता है। इफ शेडेड ट्रेट, if in the shaded trait, which is this is shaded, one of the parent is also shaded, that means it's dominant. तो मान लो अगर मैं ये वाला trait देख रही हूँ, इनका देख रही हूँ, फर्स्ट जनरेशन में इसका देख रही हूँ, तो उनके एक पेरेंट डोमिनेंट, एक पेरेंट पे shaded है, that means that carry a particular trait, that parent is carrying that disease trait. अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो इसमें भी एक पेरेंट के पास है, यहाँ पर देखूँ इसमें भी एक पेरेंट के पास है, यहाँ पर देखूँ इसमें भी एक पेरेंट के पास है, राइट। सो यहाँ पर अगर देखोगे डोमिनेंट इटसेल्फ शोज कि स्किप नहीं होगी कोई भी जनरेशन, तो यहाँ पे नो स्किपिंग, सो दैट मीन्स दिस इज डोमिनेंट। इन केस ऑफ रेसेसिव, रेसेसिव के केस में ऐसा हो सकता है कि एक पर्टिकुलर जनरेशन पे नहीं दिखा है बट बाकी जनरेशन पे दिख रहा है, बट मतलब फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर जनरेशन में वो ट्रेट दिखा ही नहीं, एंड देन इन द सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन दैट ट्रेट रीअपियर, सो दैट इज रिसेसिव। सो यहाँ पे अगर आप देखो तो इफ वी हैव अ शेडेड ट्रेट बट any one of the shaded trait the parent is not shaded, then the pedigree is recessive. फाइन। सो अगर आप यहाँ देखो तो मान लो मैं अगर इस पे देख रही हूँ, इस पे तो फिर भी यू हैव वन, बट यहाँ पर यू डोंट हैव एनी ऑफ द पेरेंट, यू डोंट हैव एनी ट्रेट हियर बट द पेरेंट इज शेडेड। बट अगर मैं यहाँ आऊँ F2 जनरेशन में आऊँ तो इसमें वन पेरेंट है, इसमें भी वन पेरेंट है, बट इसमें एक पेरेंट, इनके किसी भी पेरेंट को नहीं है। तो दैट शोज कि यहाँ इस, अगर मैं इतना पोर्शन ऑफ दिस पेडिग्री एनालिसिस करूँ तो ये पेरेंट ने स्किप कर, ये वाली जनरेशन ने स्किप किया है, यहाँ पे स्किप हुआ है, राइट, एंड देन दिस ट्रेट अपीयर अगेन। सो that's how you get to know what is dominant and what is recessive. But now we have to check कि ये dominant autosomal है या dominant sex linked है। उस केस में क्या होता है कि जितने भी तुम्हारे shaded males होंगे उनमें उनकी मदर शेडेड होगी या उनकी डॉटर शेडेड होगी। अगर तो ये कंडीशन अप्लाई होती है तो ये हो जाता है सेक्स लिंक्ड, और अगर ये कंडीशन नहीं अप्लाई हो रही
तो ये हो जाता है ऑटोसोमल डोमिनेंट। आई होप यू गॉट इट। तो देखते हैं हम एक बार इसको। इफ दिस कंडीशन इज हैपनिंग देन इट इज अ सेक्स लिंक। तो क्या हो रहा है कि जितने भी मेल्स हैं उनकी मदर भी शेडेड होगी और उनकी डॉटर भी शेडेड होगी। तो अब यहाँ पर देखें कि ये मेल है, इसकी इनकी मदर शेडेड है और इनके डॉटर में भी वो ट्रेट है। दैट मीन्स दिस इज सेक्स लिंक्ड। बट अगर ऐसा नहीं हो रहा है कहीं पे, जैसे यहाँ पर मेल है बट उसकी मदर नहीं है शेडेड, राइट, यहाँ पर मेल है उनकी मदर नहीं है, तो हेयर सॉरी मेल कह रही हूँ, इधर तो मुझे डॉटर देखना था ना। तो इन केस में यहाँ पे डॉटर है बट उनके उनके फादर को नहीं है, राइट। और यहाँ पर तो चलो शेडेड डॉटर है तो उसके फादर को है। दैट मीन्स दिस इज अ डोमिनेंट ट्रेट। बट यहाँ पर आप देख रहे हो तो दिस कम्स इन अ ऑटोसोमल कंडीशन। यहाँ पे एक्स लिंक्ड नहीं है ये। Ma'am, can you please repeat the autosomal and sex-linked property once again? ओके गिव मी अ सेकेंड अगेन, एक बार बता देते हैं इसको। ओके सो यहाँ पर एक कंडीशन होती है, क्योंकि ये है डोमिनेंट। सबसे पहले बात, आपको डोमिनेंट और रिसेसिव पता चल गया, आपके माइंड में ये हमेशा होगा जब भी आप पेडिग्री को देखोगे ना, आपको हर जनरेशन में वो ट्रेड दिखाई दे जाएगा। दैट शोज कि ये डोमिनेंट है, पहली बात। तो रिसेसिव में तुम, क्योंकि डोंट गो बाय दिस थिंग कि यहाँ पर भी तो है यहाँ पर भी तो है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि यहाँ स्किप हो रहा है। आप सिर्फ एक जनरेशन, एक पर्टिकुलर एरिया को उठाकर देखो, तो यहाँ पर स्किप हुआ है, दैट शोज कि रिसेसिव है। रिसेसिव और डोमिनेंट काफ़ी प्रोमिनेंटली ऐसे देखने से पता चल जाता है कि आप ऐसे पेडिग्री देखोगे और आप बता दोगे। बट वेदर इज सेक्स लिंक्ड और ऑटोसोमल, उसमें कुछ कंडीशंस हैं। अभी हम डोमिनेंट की बात कर रहे हैं। डोमिनेंट के केस में जब मुझे ये पता चल गया कि डोमिनेंट है, अब मुझे चेक करना है कि ये सेक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है। तो अगर मुझे चेक करना है तो मैं क्या देख सकती हूँ, कुछ ट्रेट्स हैं जो अगर आप देखोगे तो आप देखते ही बता सकते हो कि ये सेक्स लिंक्ड है और ऑटोसोमल है डोमिनेंट के केस में। तो अगर हमारे शेडेड मेल्स, शेडेड मदर, उनकी मदर भी शेडेड है और उनकी डॉटर भी शेडेड है, किसी भी शेडेड मेल की मदर भी शेडेड है और डॉटर भी शेडेड है, दैट मीन्स ये एक्स लिंक्ड है। क्यों? क्योंकि हमारा जो मेल है उसको एक्स क्रोमोसोम कहाँ से मिलता है? मदर से। और जो डॉटर है उसके पास एक, जो उनकी डॉटर होगी उसके पास एक एक्स क्रोमोसोम कहाँ से आएगा? और मतलब उस जो भी इसमें बीच में यहाँ पे इनका सन है और इसका फादर होगा जो, इट विल हैव दैट एक्स डिजीज वाला, एंड दिस डॉटर विल ऑलवेज गेट, अगर इसकी मदर भी है तो दोनों डिजीज हो जाएंगे, और अगर मदर नहीं है तो she'll be the carrier, right? So यहाँ पर अगर शेडेड मेल की मदर एंड डॉटर दोनों कैरियर हैं, दोनों शेडेड हैं, शेडेड का मतलब दे आर कैरिंग द ट्रेट, दैट मीन्स दैट दिस इज सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। एक्स क्रोमोसोम से आपको समझ आ जाएगा ये, राइट? फाइन ना? ऑटोसोमल के केस में क्या हो रहा है? ऑटोसोमल के केस में ऐसा ट्रेट अगर, ये ट्रेट अगर कहीं और ये ट्रेट Bro, अगर ma'am, नहीं your फॉलो हो voice रहा is है। हेलो, एम आई ऑडिबल नाउ? हेलो, 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 सॉरी, एम आई ऑडिबल? कैन यू टेल मी कब से मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? Ma'am, you explained sex-linked. After that, it's not audible. ओके ओके। सो ऑटोसो, और कोई भी अगर किसी भी पर्टिकुलर ट्रेट में डोमिनेंट आपको पता चल गया, बट आपको ये पता चल रहा है कि ऐसा कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, वो सारे ऑटोसोमल हो जाते हैं अपने आप ही, क्योंकि वो सेक्स लिंक नहीं है, वो एक्स क्रोमोसोम लिंक नहीं है। तो यहाँ पर एक्स लिंक नहीं हो रहा है। एक्स लिंक के केस में तो बिकॉज यू नो कि एक्स क्रोमोसोम डॉटर में उनके फादर से आएगा और सन में उनकी मदर से आएगा, सो दैट गिव द पैटर्न। बट यहाँ पर अगर डोमिनेंट है बट ऐसा कोई ट्रेट फॉलो नहीं है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इस मेल की मॉम को नहीं है, इस वाले मेल में, इस शेडेड मेल की मदर इज नॉट शेडेड, राइट? सो ये ट्रेट यहाँ पे फेल हो गया, तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट हो जाएगा। दिस इज जस्ट, दीज आर जस्ट ट्रिक, पर ये ट्रिक भी लॉजिकल है। लॉजिकल कैसे हैं? क्योंकि अगर वो एक्स लिंक्ड होगा, या एज आई सेड कि सन को एक्स क्रोमोसोम मदर से ही मिलता है,
तो अगर सन शेडेड है तो उसकी मदर भी शेडेड होगी। शेडेड मीन्स डिजीज ट्रेट, ठीक है। और अगर और जो डॉटर है उसका एक एक्स क्रोमोसोम उसके फादर से होगा, एक मदर से होगा। तो अगर वो एक्स लिंक्ड है तो अगर उसके फादर शेडेड हैं तो डॉटर में भी वो हेट्रोजाइगस फॉर्म में आएगा। सो दैट्स हाउ दिस गोइंग टू बी सेक्स लिंक्ड। उसके अगर ऐसा ट्रेट नहीं फॉलो हो रहा उसके अलावा सब कुछ ऑटोसोमल में आ जाता है। आई होप दिस इज फाइन। Ma'am, but in the same autosomal dominant chart that we see here in step 2, on one side of the pedigree tree, we notice that for the son, both the mother and the daughter are shaded. Right. For So, the here you uh, are saying or here you are saying? uh, In the the end F, if is in the F2 generation, here daughter is shaded and father is, shaded, see, and his mother is also shaded, no, ma'am? mother is not shaded here. His Achha, mother, his mother is also shaded. You are saying that. Okay. But at the same time, ये subject ये हर उसमें follow नहीं हो रहा. Like if you could see here, see जो ये पेडिग्री होता है ना, दिस इज नॉट लाइक कि आपको हर उसमें चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे इसमें इस केस में देखो या उसमें हर हर केस में फॉलो हो रही होगी सिचुएशन एक्सलेंट के केस में। फाइन। इस चीज को ऐसे समझो, इस चीज को कैसे समझोगे आप अगर मैं इसको ये बोलूं, क्योंकि ट्रेट्स तो हमें फादर और मदर से ही मिल रहे हैं। द ओनली थिंग इज यहाँ पे ये बात हो रही है कि ये एक्स लिंक्ड है या ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स में है। तो ये वाला जो ट्रेट है ना वो सारे चीजों पे सब पे फॉलो होगा, सारी ओवरऑल। तभी तो पहले अगर आप इसको देखो एक बार ध्यान से तो ओवरऑल आपको दिखेगा कि जो भी ट्रेट है ना, दैट्स व्हाई इट बिकम वेरी कंफ्यूजिंग इफ यू से इफ यू फॉलो दिस बाय ओनली वन पर्टिकुलर। तभी तो हमें पूरा पूरा मैप दिया जाता है। ये देख, इफ यू कुड सी, यहाँ पे ये वाली जनरेशन भी दिखाई है जबकि ये पूरी F1 जनरेशन है और ये F2 है, बट इन्होंने सारे कॉम्बिनेशंस दिखाए हैं। दैट्स हाउ वी कम टू नो कि ये एक्स लिंक्ड है। यहाँ पे सिर्फ एक नहीं दिखा रहा, तो ये वाली जो कंडीशन है ना, ये सब जगह पे फॉलो होगी, तब वो एक्स लिंक्ड होगा। अगर वो ये फॉलो नहीं हो रही है, दैट मीन्स कि तब वो ऑटोसोमल है। यहाँ पे फॉलो नहीं हो रही, यहाँ पे चाहे हो रही हो बट यहाँ नहीं हो रही। और एनी हाउ ये चीज हमेशा रहेगी कि यहाँ पर भी ट्रेट्स मदर फादर से ही आ रहे हैं। सो इट्स नॉट गोइंग टू बी कि ये कहीं और से आ रहे हैं ट्रेट्स, ये आ वहीं से रहे हैं। इट जस्ट कि वेदर इट्स अ सेक्स लिंक्ड और वेदर इट्स नॉट सेक्स लिंक्ड। ट्रेट्स तो एनी हाउ उसमें आ वहीं से ही रहे हैं, एज इन वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स में होंगे। बट वो आम ऐसे ही आएंगे कि फादर को सन को मदर से मिल रहा है और फादर डॉटर को फादर से एक मिलेगा, लाइक दैट। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। See, yes, ma'am. you're never going to get the answer just by seeing one particular portion of the pedigree chart. You have to consider the whole pedigree जो वहां पर बना के दिया होगा आपको, वो पूरा ही देखना है, तभी पता चलता है। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी ऑल द जनरेशन व्हेनेवर द पॉपुलेशन, व्हेनेवर फैमिली हिस्ट्री का पेडिग्री बनता है तो सारी सारी जनरेशन का ट्रेट्स देख के ही वो एनालिसिस किया जाता है। सो आई होप दिस इज देयर। और मैं Yes, नेक्स्ट ma'am. पे Yes, या ma'am. मैं नेक्स्ट पे मूव कर रही हूँ। अब रेसेसिव के केस में जब हमें रेसेसिव देखना है, रेसेसिव में रिमेंबर दिस थिंग कि रेसेसिव में मोस्टली तुम्हें हेट्रोजाइगस कैरियर्स मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है कि अगर शेडेड फीमेल है उनके फादर शेडेड जरूर होंगे, क्योंकि फीमेल का एक एक्स क्रोमोसोम फादर से आएगा। और अगर शेडेड फीमेल है तो उनका सन तो फॉर श्योर शेडेड होगा। क्यों? क्योंकि सन के पास जो एक्स क्रोमोसोम जाना है वो मदर से ही जाना है। सो इफ ये चीज फॉलो हो रही है कि शेडेड फीमेल के फादर भी शेडेड है और शेडेड फीमेल का सन भी शेडेड है, दैट मीन्स दैट इज एक्सलेंट। अगर ऐसा सारी जगह एप्लीकेबल नहीं है तो वो ऑटोसोमल हो जाता है। अब यहाँ हम देखते हैं, उन्होंने बोला शेडेड फीमेल, तो हम फीमेल पे आते हैं। शेडेड फीमेल ये है यहाँ पे पहली, उनके फादर शेडेड हैं, करेक्ट। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी शेडेड फीमेल है, उनके फादर शेडेड है, करेक्ट। यहाँ पर भी शेडेड फीमेल है, उनके फादर शेडेड है, करेक्ट।
सारी कंडीशन मैच कर रही है, दैट मीन्स दिस इज सेक्स लिंक्ड। ऑटोसोमल के केस में ऐसा नहीं हो रहा। इस शेडेड डॉटर के या फीमेल के फादर इज नॉट शेडेड हेयर, एंड हेयर ऑल्सो इफ यू कुड से सी कि फीमेल है और उनका सन शेडेड नहीं है, दैट मीन्स ये एक्स लिंक्ड नहीं है, ये एक्स क्रोमोसोम से नहीं आ रहा है, ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम से आ रहा है ट्रेट। आई होप यू गॉट दिस थिंग। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. Okay, coming to the next question quickly. Then we have the question says the Bt toxin gene from Bacillus thuringiensis used to generate GMO crop is, so the gene is CRY. How it works? Uh, so if you could see here, this CRY protein, this CRY gene is basically a toxin that we take from, This slide has not moved. sorry. Well, the slide is not moving. Okay, just give me a second. You I are think still on somehow the this. last slide. I think some अभी अभी दिख रहा है? Yes, Is ma'am. it Now it visible is now? visible. हाँ, वो थोड़ा सा लैग हो गया। The question is the Bt toxin gene from Bacillus thuringiensis used in to generate GMO crop. Which gene we take? Is it CRY? Is it CRO? Is it CDC or CRE? It's CRY. And I was just giving you a mechanism for that. That what sort of mechanism? Yeah, so you have this cry protein. So what it does that we use this cry protein, we get this cry protein expressed in these GMO crop. So once this cry protein is expressed, this so then when the insect eat this particular plant, this cry protein go into the gut of this particular insect, and this cry protein uh, get digested मिड गट में, ये डाइजेस्ट होके ट्राइटॉक्सिन रिलीज होता है, और ये टॉक्सिन जाके जो गट के सेल्स हैं उस पे रिसेप्टर पे बाइंड करते हैं। जिस भी रिसेप्टर पे बाइंड करते हैं, क्योंकि इनका एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है जो कि प्रेजेंट होता है मोस्टली एपिथेलियल सेल्स में इंसेक्ट के, वो पर्टिकुलर जो सेल है वो बर्स्ट हो जाता है। और ये सब कुछ, ये जो बर्स्ट है बहुत सारे सेल्स में होता है। तो जैसे ही बर्स्ट हो जाता है दैट मीन्स वहाँ पर वूंड जनरेट हो गया जहाँ पे बैक्टीरिया भी अटैक कर सकते हैं, एंड ओवरऑल उसकी इंटेस्टाइन जो है वो इफेक्ट होती है इंसेक्ट की, एंड देन पर्टिकुलर इंसेक्ट डाई। सो दिस इज हाउ this is being done. So the answer is A, cry gene. Yeah. So the next question is, which of the following processes can increase the genetic diversity of bacteria in nature? Just give me a second. So in bacterial, so bacteria में जो genetic diversity होती है, what are the processes that leads to genetic diversity in bacteria? So you have conjugation, transformation, transduction, and transfection. Can any of you answer this question? It's very Ma'am, is it simple. option B? It's actually C. Okay. PQR all, because conjugation भी होता है बैक्टीरिया में, ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है और ट्रांसडक्शन भी होता है। ट्रांसडक्शन इज समथिंग दैट वी डू एक्सटर्नली एंड इट हैपन इन यूकैरियोट्स, right? So if I go by this, ओके हाँ, गेट में ऑल्दो इसका आंसर सी एंड बी दोनों दिया गया था, बट इफ यू गो एंड रीड अबाउट द जेनेटिक डाइवर्सिटी, ये इसलिए दिया गया था बिकॉज आई थिंक फर्स्ट आंसर बी रिलीज हुआ था, बट देन पीपल क्वेश्चन कि ट्रांसडक्शन भी होता है, एंड देन दे करेक्टेड बोथ दी ऑप्शन। बट अगर आप पढ़ोगे जेनेटिक डाइवर्सिटी इन बैक्टीरिया, यू विल फाइंड ऑल द थ्री ऑप्शन वेयर यू हैव कॉन्जुगेशन, वेयर यू हैव ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन वायरसेस के थ्रू होता है। हेलो? Yes, ma'am. My doubt was only about this. If transduction is viral mediated, is it still considered to be a natural form of gene Yeah, transfer yeah. between bacteria? If you talk, if you see, if you check, and if you have, because diversity, we are talking about genetic diversity,
एंड व्हेनेवर वी हैव, अगर हम अपने यूकैरियोट्स में एपिजेनेटिक और जितने भी इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं उनको भी डाइवर्सिटी में काउंट करते हैं, तो येस दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, क्योंकि ट्रांजेक्शन जो बैक्टीरिया अटैक होता है उसके बाद भी तो जीनोम चेंज हो जाता है उन पर्टिकुलर बैक्टीरियाज का, एंड देन दे मल्टीप्लाई इन द एनवायरनमेंट एंड देन दे बिकम अ न्यू स्पीशी ऑल टुगेदर, या either new species or either evolved species of that particular bacterial species. Okay, So ma'am. this is Understood. also considered as a process of genetic diversity. I hope you got it. This is here, you can go through this, you can check this process, what all happen in conjugation, transformation and transduction. I'm not getting into detail. I'm pretty sure that you guys are aware of all the three processes. Then transfection, जो कि हम यूकैरियोट्स में करते हैं, जिसमें हम external environment provide करा के भी insert a particular desired gene in a particular this thing cell. I'm going to take one or two more questions. So here, I think you can do this question बहुत आराम से. यहाँ पे बोला गया है उन्होंने कि पर्पल कलर फ्लावर हैं जो कि डोमिनेंट हैं किन पे, वाइट कलर फ्लावर पे जो कि रेसेसिव है. अब अगर हम एक जेनेटिक क्रॉस करते हैं बिटवीन टू पर्पल फ्लावर्स और हमारे ऑफस्प्रिंग वाइट फ्लावर्स आते हैं, तो हमें ये बताना है, मतलब उस हमने ऐसा जेनेटिक क्रॉस किया जिसमें पर्पल फ्लावर्स थे बट हमारे ऑफस्प्रिंग वाइट भी आए. So we have to tell the probability that the third offspring of these parent will have purple flower. So अगर मैं purple flower की बात करूँ, they are saying purple flower ऐसे हैं, ठीक है, कैपिटल P स्मॉल p वाइट है, ये पर्पल है, ये वाइट है, राइट. सो अगर मैं इसको आपको एक उससे दिखा देती हूँ ताकि क्विकली हो जाए, बिकॉज आई हैव टू एंड द सेशन. सो इफ यू कुड सी हियर, अगर हमारे दोनों पर्पल होंगे, दोनों पर्पल फ्लावर होंगे जो कि ये जनरेशन है, दे हैव सेड अ जेनेटिक क्रॉस बिटवीन टू पर्पल फ्लावर बियरिंग प्लांट्स रिजल्ट इन दी ऑफस्प्रिंग ऑफ वाइट. देखो इस केस में तो हमें सारे पर्पल मिलेंगे व्हेन वी गोइंग टू हैव ऑल द पर्पल और वाइट के बीच में, because it's a dominant trait. But if you're going to have heterozygous purple के बीच में cross, then only we're going to get a white flower. So मतलब हमारा ये वाला particular trait follow हो रहा है. तो अब उन्होंने पूछा है कि अगर हमारी what will be the probability कि जो हमारा third offspring है वो purple होगा. यहाँ पे white है तो मतलब ये वाला trait follow हो रहा है, और अगर third offspring purple होगा मतलब purple होने के chances इसमें कितने हैं, 3/4, और वाइट के 1/4 है. वाइट तो है, ये इन्होंने हमें ये, इससे हमें ये इंडिकेशन मिला कि वी आर हैविंग अ क्रॉस बिटवीन टू हेट्रोजाइगस पेरेंट बाय दिस स्टेटमेंट वेयर दे आर सेइंग कि उनका ऑफस्प्रिंग वाइट भी था. एंड नाउ दे आर आस्किंग कि अगर वाइट भी ऑफस्प्रिंग है तो अगर अब आप ये बताओ कि उनका थर्ड ऑफस्प्रिंग जो है वो पर्पल होगा कि नहीं, उसके कितने चांसेस है. दैट इज 3/4. 3/4 मतलब 0.75. So 0.75 going to be the answer. I hope you got this question. समझ आई ये चीज. Yes, ma'am. Right. So the second statement, second line is actually telling you that what kind of cross is done. That's it, and I think I'll take this question as also, and then we'll end this session. So यहाँ पर भी they have given you a conditions. They have told कि R जो है वो dominant है over yellow, and fruit color, ये तो fruit color के केस में है, और purple is dominant over green stem के केस में. तो fruit के केस में R is dominant and yellow is small recessive, and stem के केस में purple is dominant and green is recessive. This is dominant, this is recessive. ठीक है, तो अब वो उन्होंने बताया ये हमारे पे प्रोजेनी थी आफ्टर मीटिंग. सो यू हैव टू टेल कि पेरेंट का जीनोटाइप क्या होगा. तो कभी भी जब ऐसा क्वेश्चन आए, जो भी पॉपुलेशन हाईएस्ट है दैट गोइंग टू बी योर पेरेंट पॉपुलेशन. सो इनमें हाईएस्ट कौन सी पॉपुलेशन है, एक तो ये और एक तो ये, राइट. सो ये हमारी पेरेंट पॉपुलेशन होगी. अब पेरेंट पॉपुलेशन में उन्होंने अब ये तो आपको पता चल गया कि पेरेंट पॉपुलेशन ये है. अब उसमें वो बता रहा है रेड फ्रूट है. अब रेड फ्रूट होमोजाइगस में है या रेड फ्रूट
हेट्रोजाइगस में है क्योंकि ये डोमिनेंट ट्रेट है। ये हम कैसे चेक करेंगे? बाय लुकिंग एट द अदर पॉपुलेशन। इफ आई एम गेटिंग अ रेसेसिव ट्रेट in the recombinant progeny, तो उस केस का मतलब ये है कि हमारे पास हेट्रोजाइगस पेरेंट होगा इस पर्टिकुलर ट्रेट के लिए, तभी हमको रेसेसिव मिल पाएगा। राइट? ये बात समझ आई? Ma'am, I'm very sorry, but can you explain the first step again? I didn't understand how we are determining capital R or small r capital R. ओके, ओके फाइन। आप कभी भी आपको कोई पॉपुलेशन, ये बात आपको समझ आ गई कि कोई भी पॉपुलेशन में जो हाईएस्ट प्रोजेनी का नंबर होगा दैट गोइंग टू बी अ पेरेंटल पॉपुलेशन, पेरेंटल प्रोजेनी, बेसिकली पेरेंटल प्रोजेनी, पेरेंटल जीनोटाइप्स जो होंगे वो सबसे हाईएस्ट होंगे एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में। ये एक स्टेटमेंट है जो आपको रिमेंबर रखनी है कि किसी भी पॉपुलेशन में अगर आपको ज़्यादा सबसे ज़्यादा नंबर जो मिल रहा है प्रोजेनी का, वो तुम्हारे पेरेंटल होगा। तो ये पार्ट हो गई। तो उस पर मैंने आपको ये बताया कि ये दोनों हमारे पेरेंटल होंगे। ठीक है, ये आई थिंक ये पॉइंट करेक्ट है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। नो मैम। No, ठीक है। no, ma'am. अब मैंने आपको बोला कि अब हमें ये चेक करना है कि क्योंकि पेरेंटल के बीच में क्रॉस होगा, राइट? तो अगर मेरी रिकॉम्बिनेंट में रिसेसिव ट्रेट आ रहा है, अब अगर मैं मान लो मेरा सारा डोमिनेंट होता, फॉर एग्जांपल मान लो क्योंकि दोनों पेरेंट रेड हैं, अगर ये डोमिनेंट होते, होमो डोमिनेंट होते, तो इनकी प्रोजेनी हमेशा डोमिनेंट होती, राइट? अगर यस मैम। एक Yes, एक हेट्रो होता और एक होमो होता, तो भी इनकी पॉपुलेशन डोमिनेंट ही होती, राइट? यस मैम। yes, ma'am. बट अगर हमारे दोनों हेट्रो होते, देन ओनली वी हैव अ पॉसिबिलिटी कि हमारी एक जो है रिसेसिव होगी, जो कि यहाँ पर दोनों है। तो ये ट्रेड पक्का हो गया कि ये चीज हमारी ये वाली ही होगी। ये दोनों ऑप्शन तो एनी हाउ एलिमिनेट हो गए। करेक्ट? यस मैम। यस मैम। Okay. और रिमेनिंग के केस में तो क्लियरली दे आर सेइंग दैट यू विल हैव पर्पल स्टेम। अब इस केस में भी अगर मेरे दोनों पर्पल पॉजिटिव हों और मैं ग्रीन के साथ उन्हें क्रॉस कराऊं, तो मेरे सारे पर्पल हो जाएंगे, ग्रीन का ऑप्शन ही नहीं बचेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। एट द सेम अगर इसी को मैं हेट्रो कर दूं और तब क्रॉस कराऊं, सॉरी इसको मैं स्मॉल पी कर देती हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पर भी स्मॉल पी, सॉरी फॉर दिस। तो मेरे पास पर्पल भी आएगा और मेरे पास ग्रीन भी आएगा, राइट? तो ये फॉर श्योर हो गया कि मेरी एक तो हेट्रो होगी और एक होमो होगी रिसेसिव में। ये चीज समझ आई? यस मैम। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है? आई होप दिस इज क्लियर। तो आंसर हमारा ए है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस का क्विकली से बता सकता है कोई मुझे कि जीनोम कौन सा होता है? इज इट अ नेगेटिव सेंस और अ पॉजिटिव सेंस? इट्स अ आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आर। ओके, इट्स अ पॉजिटिव स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, और डबल स्ट्रैंडेड नहीं, सिंगल स्ट्रैंडेड। दिस इज नॉट द ऑप्शन। मैं आपको जल्दी से ये बता रही हूँ, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग यू इन एनी वे, आई एम जस्ट गिविंग यू द फैक्ट हियर। सो पॉजिटिव सेंस क्या होता है? पॉजिटिव सेंस आरएनए वो आरएनए होता है जो डायरेक्टली ट्रांसलेट हो जाता है, उसमें कन्वर्जन नहीं होता। सो यू हैव आरएनए, इट गेट डायरेक्टली ट्रांसलेटेड इनटू द प्रोटीन। बट जो नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है वो पहले कन्वर्ट होता है पॉजिटिव सेंस में, क्योंकि इट्स अ नेगेटिव सेंस मतलब इट्स अ इन्वर्टेड ओरिएंटेशन 3 प्राइम टू 5 प्राइम। वो पहले 5 प्राइम टू 3, मतलब ये एक तरीके से नॉन टेम्पलेट हो जाता है। ये पहले टेम्पलेट में कन्वर्ट होगा ट्रांसलेशन के, और फिर ट्रांसलेशन होगा, दैट इज नेगेटिव सेंस। तो जो हमारा कोरोना वायरस का है वो पॉजिटिव सेंस है। दिस इज अ फैक्ट, जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दिस थिंग। ये मैंने जस्ट
अच्छा, पैरासेंट्रिक और पेरीसेंट्रिक, क्वेश्चन पैरासेंट्रिक एंड पेरीसेंट्रिक में है। तो उन्होंने पूछा है ये इनमें से कौन सी पैरासेंट्रिक है। अब पैरासेंट्रिक के केस में क्या होता है, पैरासेंट्रिक में कभी भी वो क्रोमोसोम इंक्लूड नहीं होता। तो एक सिस्टर क्रोमैटिड का जीन दूसरे सिस्टर क्रोमैटिड पे, मतलब दूसरी साइड ऑफ क्रोमोसोम पे नहीं शिफ्ट होगा, ये नहीं शिफ्ट होगा ऐसे। तो मतलब ए और बी यहीं पे ही शफल हो सकते हैं इसी साइड पे, ये सेंट्रोमियर को क्रॉस नहीं करेंगे, दैट इज पैरासेंट्रिक। तो ये विद इन वन स्ट्रैंड हो जाता है। और पेरीसेंट्रिक में ये क्रॉस करता है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन पूछा है पैरासेंट्रिक कौन सा है, तो एल एम और एन ओ पी क्यू। एल एम इधर रहेगा, इधर से कुछ शिफ्ट नहीं होगा, तो ये सारे ऑप्शन कट हो जाएंगे, तो ये आंसर है इसका। ठीक है। सो व्हाट ऑल क्वेश्चन आई हैव, दिस इज जस्ट सिंपल स्टेटमेंट। मैं क्विकली मूव करूँ बिकॉज आई हैव टू एंड द सेशन। इसमें बोला है इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल ऑफ अ डिफरेंट लीनेजेस हैव अ डिफरेंट जीन प्रोफाइल। ठीक है, तो हाँ, हमारे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके जो सेल्स होते हैं, हर सेल की टाइप ऑफ सेल में डिफरेंट टाइप ऑफ जीन एक्सप्रेशन होता है। फॉर एग्जांपल लिवर में अलग, हार्ट में अलग, ब्रेन में अलग, राइट। सो दिस स्टेटमेंट इज राइट। नेक्स्ट स्टेटमेंट, उसका रीजन क्या दे रहा है वो, कि ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग इज द ओनली मैकेनिज्म टू जनरेट प्रोटीन डाइवर्सिटी। डू यू थिंक दिस इज राइट? क्विकली बता दो। डू यू थिंक सिर्फ ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग से हमारी प्रोटीन डाइवर्सिटी जनरेट होती है? नो मैम। और क्या क्या चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से प्रोटीन डाइवर्सिटी हो सकती है? ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग से होती है, बट इट इज़ नॉट द ओनली मैकेनिज्म। Ma'am, there's also some environmental factor like Environmental epigenesis, factor, right? Post translational epigenetic, modifications। yeah, post-translational modifications. और अगर आप स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट में देखो तो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें फ्यूजन हो जाता है, जीन फ्यूजन होता है, जिसकी वजह से भी प्रोटीन का पूरा चेंज हो जाती है डाइवर्सिटी। स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट पे देखो तो ऐसा भी होता है कि एक प्रोटीन एक पर्टिकुलर जीन से बना, दूसरा प्रोटीन का डायमर, मतलब दूसरे प्रोटीन का एक सब यूनिट दूसरे जीन से बना, एंड दे बोथ कम टुगेदर टू बिकम अ फंक्शनल प्रोटीन। ये सिचुएशंस भी होते हैं। So if I'm talking about just genetic, तो genetic में yes, you have environmental factor, you have post-translational modification, there are many other things that lead to different kind of diversities. Then again, this question is chromosomal mutation can change structure of chromosome. This statement is correct. Yes, chromosomal mutation से for example अगर मान लो deletion होता है तो ये ऐसा दिख सकता है, ये वाला पार्ट इसका डिलीट हो सकता है। तो yes, chromosomal mutation can lead to different chromosome structure, different structure of chromosome. And all chromosome mutation arise due to non-disjunction of chromosome during meiosis and mitosis and meiosis. Do you think this statement is right? So no, this statement is wrong. As I mentioned कि सिर्फ माइटोसिस और मियोसिस के ड्यूरेशन में जो चेंजेस होते हैं वो उनकी वजह से क्रोमोसोमल म्यूटेशन नहीं होती। दे आर लॉट मेनी फैक्टर, जैसे कि ये जो इन्वर्जन और डिलीशन और ट्रांसपोजोमल एलिमेंट्स होते हैं वो मूव कर जाते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं दैट कैन लीड टू क्रोमोसोमल म्यूटेशंस। और वो वाली क्रोमोसोमल म्यूटेशन की बात हो रही है जिनसे स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं। तो स्ट्रक्चरल चेंजेस के केस में जब डिलीशन इन्वर्जन होते हैं, ये माइटोसिस मियोसिस के टाइम पे नहीं होते, ये रैंडमली कभी भी हो सकते हैं। तो दैट लीड्स टू change in structure of chromosome. So this statement is not right. This happened, but this is not the only process. So here also you have A is true and B is right. Then you have C value paradox, that is referred to what? You have the lack of correlation between genome size and genetic complexity of an organism, the presence of genetic sequences that propagate themselves within a genome, the coexistence of multiple allele at the genetic locus, and the concept of two or more genes may have same function. So C value paradox किसी को पता है क्या होता है? I think पता होना चाहिए आपको। So it is basically कि जो
अगर हमारा जीनोम साइज बहुत बड़ा है जैसे कि ह्यूमन का है तो जेनेटिक कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई होगी, ये ज़रूरी नहीं है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कहते हैं ना कि हमारा 90% 99% या 95% ऑफ द जीनोम इज जंक एंड ओनली 5% इज कोडिंग और ओनली 10% इज कोडिंग एंड नाउ तो वैसे तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने काफ़ी चीज़ें चेंज करी हैं नाउ दिस, जिसे हम जंक बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। बट जस्ट बिकॉज किसी का जीनोम साइज बड़ा है डजेंट मीन कि उसकी जेनेटिक कॉम्प्लेक्सिटी भी हाई होगी, क्योंकि इफ यू गो टू प्रोकैरियोट्स इट हैज़ अ वेरी स्मॉल जीनोम बट द कॉम्प्लेक्सिटी इज वेरी हाई। वाई? बिकॉज the percentage of genome coding for proteins are very high in lower microorganisms. उनका जीनोम इतना छोटा होता है पर उनकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई होती है। दैट इज सी वैल्यू पैराडॉक्स। सो सी वैल्यू पैराडॉक्स पे सी वैल्यू इज बेसिकली टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए इन द जीनोम एंड वी वुड एक्सपेक्ट दैट जितना बड़ा जीनोम होगा उतना ज़्यादा हमारा डीएनए जो है वो काम करेगा, बट ऐसा नहीं होता। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन दैट। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं ऐसा होगा बट ये ऐसा होता नहीं है। दैट इज व्हाट सी वैल्यू पैराडॉक्स मीन। सो आई होप दिस all is clear, and that's all from my side from the genetics part. These are the questions that you have from past few years, and in the next class I'm going to take techniques, and then I'm going to take enzyme kinetics in the sixth session. So I would request you all to stay connected so that you can cover that portion as well. And if you have anything, you can ask me now or you can ask me in the next class. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much for joining. Thank you, ma'am. Okay, thank you.